Expressing concern over the increasing pollution levels in Delhi NCR, Supreme Court, while hearing briefly the plea by BJP MP Manoj Tiwari challenging the blanket ban on sale and purchase and usage of firecrackers during festive seasons, observed that the court had already passed detailed order with regard to the usage of firecrackers and will not vacate the previous order, and said that after Diwali the air quality of Delhi NCR will deteriorate more, and also said even the use of green crackers be restricted. पटाखों पे हम लोगों की पीआईएल है कि ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करना चाहिए। आज उस पे हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस केस को टैग कर दिया गया है, जो पटाखों का केस देखा जा रहा है जहां, और हमें पूरा उम्मीद है कि ये केस वहां टैग होना हमें निश्चित रूप से न्याय दिलाएगा और हम हिंदू त्योहार ग्रीन क्रैकर्स के साथ दिवाली मना पाएंगे। इस बात पे हमें बहुत संतोष है और हम आगे जिस दिन लगेगा डेट उस दिन फिर इस कार्य के लिए आगे बढ़ें। A bench headed by Justice M.R. Shah also pointed towards the parali season and said the next few days will be very difficult for all of us, and tagged the case with already pending matters before the top court. From New Delhi, this is Kanu Sarda for India Today.